Okay, so good evening all. We have Aman today, who is a 2016 alumni of Ramakrishna Mission Vidyapith, and he is currently pursuing electrical engineering in IIT Patna. In this session, he will be talking about his journey of a startup that he and his elder brother have started. It's called Milkvilla, and they are currently operational in Muzaffarpur. Uh, so he will be sharing his learnings and the challenges that he has experienced over the last few years of running this startup. So without any further ado, I think we can start with Aman sharing his experiences. So please. So, thank you, September. Uh, Let me get in, and I'll try to moderate the session, ask Aman questions. And as we have planned, I and Aman planned, we would So, take the discussions in that direction, and in the end we will be having the question answers. Okay. So Aman, just introduce yourself. okay, so uh, you all, as you all know, I am Aman. I passed out from RKM in 2016, 10th class. So basically, I was interested in electrical and electronics while I was in RKM. I used to get the books from the senior secondary section of BSc and higher classes to study electrical and electronics. So naturally, I joined a college with electrical and electronics branch, IIT Patna. But in the first year, my focus shifted from electrical engineering to more software side, because I could see my results live in front of me. In in electronics, the research is a little bit tough, and uh, there's time gap between. If I design something, I will have to get it printed. Everything takes time. So naturally, my focus shifted towards software. And when I was in first year, after the end of first year, my brother started Milkvilla, and I started contributing to it in technical areas. So now fast forward 3 years, right now I am fully involved in Milkvilla, and I handle all the technical aspects of the company, from hardware to software, IoT, and everything. So that's my short intro, Prince. Good. So what is Milkvilla? Just tell everyone, those who don't know, who have first come here, they have just joined out of any curiosity. Just introduce them what Milkvilla you and your brother thought of. So Milkvilla is a supply chain network, a hyperlocal supply chain network with direct access to producers and consumers. Right now, basically, Milkvilla is a network of farmers and consumers, where milk collection and delivery happens at doorsteps of those involved, like farmers and customers both. Uh, and at the farmer side, the collection happens. We take the milk from farmer's doorstep. At the delivery side, we deliver at the doorsteps. We are in fresh milk segment, uh, unlike Amul or Sudha. And I think that's the basic about Milkvilla. We will talk more as we continue. So I get it. It's a basically supply chain of uh, agricultural products end to Yeah. end. Okay. What inspired your brother or maybe you to contribute to get into something very unconventional, like delivering milk rather than pursuing your electrical engineering, which is a very high paying job? What inspired you? Why do you join this venture? When we were kids, we used to live in villages, and when we became like 3 or 4 years old or 5 years old, we moved to city for proper education, because in the villages and lack of proper education is there. So when we moved to the cities, our father used to work in farms. So I could see that in the villages there was a
in the villages and the city, there was a disparity between supply and demand. So in the villages, the farmers couldn't get proper rate for their milk. Actually, the agricultural products that the farms produce, they have a certain time gap. Like when they sow the seeds, it takes around 5 to 6 months for that seed to bloom and to give the product. But the farmers' daily household needs are fulfilled by the milk, but they weren't getting proper milk rate, and they weren't getting proper payment on time. So there were problems of farmers. And in the city where we used to live for education, we saw there was shortage of milk. We couldn't get proper fresh milk, and there were some people who used to provide it, but the price was too high. So this is the obvious. There was the obvious need to connect these two ends. So that's what propelled us into this. Good, great inspiration. So what's your long-term objective, and what do you wish to achieve if you maybe try to expand it across multiple locations? How do you go about achieving your objectives? Currently, we are building a model, a business model in one city, and it's highly expandable and highly profitable model. So we are planning to expand it pan India, and basically we want a network, a place where the farmers can. We want to make a company which provides farmers and consumers everything. In farmer side, we want to provide all the cattle feed requirement. Like we want to be a company which is a one-stop solution for all the cattle rearing requirements. Like we also provide cattle feed to the farmers. We provide doorstep delivery. So everything that a farmer needs for cattle rearing, we will provide it. And in the consumer side, we go to the customer's doorstep every day. So there's a scope for a product delivery there also. So this is our long-term objective. Yeah, get it. So let's first watch a video that you have designed, a promotional video that you have designed for your organization. So Let me share the screen. I'll put this out. I'm sharing the screen. Okay. Go ahead. It's visual, right? Seema Devi lives in the village Rampur with her 3 children and 2 cows. Her husband lives in Punjab to earn a livelihood. Earlier, she had no cows, as selling milk and procuring cattle feed was a problem for her. Today, she does not need money from her husband for her daily expenses. Her children feed on cow's milk, and the remaining milk is given to the Milkvilla cart. ऐसे दूरा पर दिए आज ना वो फट के हिसाब से अति पैसा मिले से जोड़ के 15 दिन पर It is morning time, 6 o'clock sharp. Our carts are out moving towards different villages to collect milk. Santosh, our cart driver, has reached Seema Devi's house. He first weighs the milk on a weighing scale, and a sample of milk is put into milk analyzer for testing. As soon as the testing is finished, the result along with milk weight is uploaded to the server through smartphone app. Seema Devi can now see the final milk balance in the Kisan app. Now the time is 9 o'clock. Carts are returning back to the village center. Here, milk from each cart is weighted separately, and overall milk quality is checked by the master testing machine. Expected quantity and quality is displayed by the server. The milk thus collected is cooled instantly to maintain natural taste, freshness and aroma. Cooling is the only processing done to milk, after which the milk is transported to the city center for further distribution.
It's 7 o'clock in the morning. Madhu Mishra needs a cup of tea now. The milk cart is just 2 minutes away. She prepares her container and comes to the door, where she is greeted by the cart driver, Nitesh. Nitesh opens the Milkvilla app and presses 2 liters against Madhu Mishra's name. This mobile app, which remains connected with our automated milk dispenser, starts dispensing milk to her container, and a WhatsApp notification is sent immediately to her using the server. Nitesh now moved to another door for another dispensing. कंपनी से आपके अपने शहर के किसानों का एक अनूठा प्रयास है। जी हाँ, ताजा दूध पाएं। आज का दूध आज ही पाएं। शुद्ध नहीं तो पैसा नहीं। मेरा नाम चुन्नू कुमार पांडे है। और दूध में आप लोगों को क्या बढ़िया लग रहा है? बढ़िया ये लग रहा है कि टाइम पर पहुंचा रहे हैं, दूध का क्वालिटी भी अच्छा है आपका, ठीक है, पैकेट से अच्छा है। मेरा नाम नितेश कुमार है। हम लोग जाते हैं कि जितना एरिया हम लोग का बटा हुआ है और उस एरिया में जाते हैं तो अपना मैप खोलते हैं, उसके बाद अपने आप पता लग जाता है कि किस कस्टमर को दूध देना है। He started his day early morning along with fellow partners. Milkvilla app shows him the area and the targeted customers. They moved around from door to door delivering milk and milk products and returned back to the center at around 10 o'clock. A similar process is repeated in the evening session. We are able to provide original milk at a cheaper price without plastic packaging. Today we are saving tons of single-use plastic every year with the potential of saving millions of tons of plastic which are having no immediate solution. Milkvilla is a decentralized network of farmers and consumers, where milk collection and delivery occurs at doorstep in non-packaged form. We are today a network of 1,000 consumers, another 1,000 farmers, and a set of employees. Our unique milk dispensing and milk analyzing system is all weather, tamper-proof and maintenance-free. They are designed, assembled and printed at our company workshop. They remain connected with the internet throughout and continuously uploads data to the server along with position and timing. This data helps us do data analytics in the back end. The electric vehicle is the future of mobility. We at Milkvilla have put in extensive work to ensure stability, robustness and reduced cost of vehicles. They have been strengthened to withstand the rugged terrain in villages. Milkvilla aims to become the mainstream milk delivery company where people will enjoy the ethnic Indian taste in the comfort of their home. To accelerate the process of expansion, we have developed the franchise system, which in turn will free up the company from capex and opex liabilities. We have already finalized 2 franchise partners, one in Uttar Pradesh and the other in Bihar. Within 5 years' time, Milkvilla will be a household name for fresh milk delivery in India. Throughout our journey, Dr. Anand from AIC Jyoti have been a constant support for us. We also thank Government of India for funding startups like us through such noble initiatives. That seems an exceptional effort and application to your IoT related passion that you wanted to explore right from your school days. And you're putting them into practice and building something and solving problems like plastic wastes and many. So how do you see about going on with engaging with multiple stakeholders
the farmers, customers, the internal management, and all of that. And then we will move towards the innovation. And if you see, as you said, you are going towards somewhat in the direction of what Amul is or Sudha is, but they still, I don't think they have such digitally enabled operational capability. So let's start with farmers and customers that you have as your stakeholders. Okay, so farmers are the first step in our whole supply chain. So basically, in the morning, our milk carts, our vehicles go to their doorsteps to collect milk. So uh, their milk is tested in our testing machine, and a SMS is sent to them regarding their transaction. The rate of milk is decided by the testing from the testing machine, and the milk quantity is tested. So, and after that, there's a price. So we have a wallet system there. In Milkvilla, in the farmer side, there's a wallet system where the money is automatically added to their wallet after each transaction. So the farmers, we provide the farmers with cattle feed. They can order. We have a mobile app. Maybe I can share my screen and show it. We have a mobile app where farmers can order cattle feed. Actually, some of the companies or platforms have problems with engagement of the farmers. Like if they make an Android app, will farmers open it or see it? But we have an advantage that farmers have to open the app because they want to see that there's money involved. They want to see how much balance they have. They want to see how much money they have, how much milk they given. They want to check the transactions, so they have to open the app. And when once we get the farmers to open the app, there are a lot of possibilities that can be done there. Like they can also cattle feed. The cattle feed like Kapila Pasu Ahar, they come in 50 kg bags. So some of the farmers are women. Uh, their husbands or other male members of their family are in cities. They go to cities to earn. They go to cities in states like Bihar. People go to Punjab or Kolkata to earn money. So the female members are left at home. They are left for cattle rearing. They have to take care of the children also. So there's they have some issues with bringing 50 kg cattle feed bags from the market. So we provide the farmers with free delivery of cattle feed. We don't even have to take money from them because they are providing us milk, and they already have money in their Milkvilla wallet. So that money is already also deducted automatically. So they don't have to walk to the collection centers to deliver their milk. We provide them doorstep delivery, doorstep collection. We provide them doorstep delivery of cattle feeds. We provide them with medicinal advice, medical advice for cattle feed, for cattle, and we are expanding our services slowly. Right now, we are working on cattle insurance also, and the silage or hara bhusa, what we call it. So it's dried. So we are also planning to provide this to the farmers. So wherever we go, whichever villages we start collection, our most of the farmers try to join us, and our retention rate is very high in the farmer side also. We also have a credit system in the farmer side that the cattle feed that we provide, or some money according to how much milk they provide us, we calculate them. We provide them a credit limit automatically in our server and from their past data, and we can provide them some credits also in the same way. There was some problem with money because they weren't getting paid in time. They weren't getting paid properly. So we have a transparent system. We have a leakage proof system through which all the cash, all the money is directly transferred to the farmers. We provide them doorstep delivery of cash also. Every 15 days, we provide them with whatever cash is left in their account.
Great. So you are incentivizing farmers on multiple fronts, giving them a digital framework to operate, licensing for their cattles, and a supply chain of bhusa and all the raw materials to rear their cattles. And it's a great catering to the farmers. It's benefiting them a lot. Why would they choose to go with you? Yeah. And what do you offer to the customer? What would be the pricing, and how do you incentivize the customers to choose you over other competitors? Or Okay, so in the customer side, we provide doorstep delivery of milk. First of all, we don't use any packaging, and the most important part is that our milk is fresh and non-processed. We don't do any processing. In companies like Sudha or Amul, you get around 5 to 7 days old milk, and the milk is reconstituted. There's a trend in India's dairy market that in winter there that supply is more and demand is less, so the milk is converted to solid milk powder, SMP. And in summer, when where the demand is high but the supply is low, they reconvert that milk back into they reconvert that powder, SMP, back into milk. So people get reconstituted milk and 5 to 7 days old milk, because the delivery because the supply chain is very long, very large. And the this is a main this is the major point in our system, that we provide them fresh milk, and the milk from the collection to delivery point there is less than 24 to 36 hours gap. The milk is not processed. We do only chilling on the milk to preserve the quality. We also don't do any pasteurization or homogenization, because it also tampers with the quality and originality of the milk. So this is what we provide in the customer side. And we also provide some basic milk products like paneer and ghee, because these are we get some buffalo milk also, and these are some byproducts of that milk. In market, we only provide cow milk mostly. We use buffalo milk for making products. So good. This is our services on the customer side. So I understand that you cater to the farmers. You're catering pure milk to your consumers. What goes internal to the supply person who is riding the bike and taking the milk right from the farmer, delivering it to the consumer? What are the incentives for them, and the internal management system that operates within your organization? I know it's small, but still, whatever scale you operate. Okay, so we have created a localized supply chain. There is a small supply chain from farmers to our village rural center, there where instant chilling is done to preserve milk. And after that, after chilling, that milk is transported to our urban center or city center. In India, there's a trend that mostly in tier 2 or tier 3 city, that there's a city, and around that city in every direction there are villages. There's a central city, and around that city there are villages. So in villages we do collection, and there's a local rural center where we chill the milk, and that milk is transported to the urban center, the city center. Here the milk milk storage and temperature, we store the milk here and we maintain temperature here. After that, that milk every morning and evening, that milk is loaded in our milk delivery carts, and that milk is sent to the market. And whatever milk is remaining, actually we have a small cycle, so if there is some milk returned from the market in morning, we can resell it in evening. And if the milk gets old, we have contacts with the hotels or other tea shops. We provide them with remaining milk. Actually, we don't have a completely subscription system. We have a partial subscription system. Some customers subscribe to our milk. They either pay before they make advance payment, or they pay after a month. So there's a little bit difference in that. We have incentivized the advance payment system, because the credit limits in the customer side, sometimes they don't, we
cannot collect them. We cannot collect them back. There are some issues there. So we have incentivized the advance payment system. We provide, I think, almost 2 rupees margin per liter milk for advance payment. And the whole internal management system is custom designed by us. From application to website, everything, the whole internal management system we have custom built. We have provided checks at each step to prevent leakage, to prevent tampering with the milk. We have enhanced our machineries ourselves. We have introduced IoT in everything. We have introduced data science in testing machines. These things helps us reduce the leakage and manage our system properly. Great. So how, let's talk about the innovations that you have done, your passion for robotics. I Prince, I think your voice is breaking up. Okay, so you said innovations. So that was hello. Yeah. So you said innovations. So in whole supply chain from farmers to customer side, we have custom designed a lot of things. Like in the farmer side, let's start at the beginning. In the farmer side, collection side, we have our self-designed testing machine, milk testing machines. So earlier, when in the testing machines we purchased from the market, we had some issues like they were not very accurate, and the same sample, if tested twice, the results vary. And there are some also issues with the level of the milk. Like if in the same bucket you take milk from the bottom level and you take milk from the top level, they will have different rates. So that created a dissatisfaction in the farmers. Also, for 2 consecutive days, the same the same cow's milk will have different rates. So these things created dissatisfaction in the farmers. So we have self-designed milk testing machines and introduced data science in it to stabilize the milk rates. We have made the testing machine intelligent, and we have provided 2 systems. One is farmer specific calibration. So we have the data of each farmer for the past 1 month, 2 months, or maybe 6 months or 1 year. So we optimize the calibration of that testing machine according to that data. And secondly, we have calibration on the go. So as the testing machine goes from farmer's doorstep to doorstep, so we have a history of the data, of the testing data. So we also check after each data if the testing machine is working properly or not, if there is some cleaning issue. So we do calibration on the go. So these are 2 points. These are 2 improvements that we have done in the existing testing machine, and we have connected it with IoT through our to our mobile app. So it completely automated. The driver which goes to the farmer's doorstep just has to take the milk sample, a small sample, and put it in the machine, and he will just press the button on app, and everything will be done automatically, from testing to weighing, everything, and the data will be saved automatically. So we have introduced automation there. In delivery side, we have automatic milk dispensers, which is connected through Wi-Fi with mobile app. So if a customer needs 1 milliliter milk, the driver just presses 1 liter milk in his mobile app, and the milk automatically gets dispensed, as you saw in the video. So that's the dispenser. We have created an internal management system of internal systems like the bulk milk coolers. The bulk milk coolers that we purchase from market don't have proper monitoring systems. Let's say the bulk milk cooler is running, but the milk is not getting chilled. Let's say there's some leakage in the bulk milk cooler's compressor,
which prevents it from properly cooling. So those detections from software, using software and IoT, that those things we have also done. Apart from that, we have worked on e-vehicles, e-rickshaws. We, as you saw in the video, we have our most of our system is based on e-vehicles. So we have done extensive work on it to ensure robustness and to prevent toppling. The most of the e-rickshaws in market topple very easily. They have they don't have very wide base, so they topple easily. So we have worked on those things. We have worked on the wiring of the machines. So so we have also worked on the e-vehicles. So those are the innovations that we have done at Milkvilla. We have we also, the dispenser and testing machines are also GPS tagged, so we have data on where the milk is dispensed, how much milk is dispensed, at what time milk is dispensed, how much time did it take to dispense that milk, and those data are used to do data analytics in the backend. Great. So now, since you have been operating for some time, you must have been collecting data of your customers, your suppliers, the milk testing quality. So what is the scale that you are currently operating at, and what has your learning been with? How can you scale it or diversify across catering to customers or catering to byproducts of milk to your consumers? How do you go on around it? Okay, so currently in Muzaffarpur city, we have around 1500 to 2000 liters of sales per day. And regarding scalability and scaling, we are developing a franchisee system. So actually our system is both capex and opex. So it is capital intensive and operation extensive. So we are trying to free our system from those two liabilities, those two burdens. So we are developing a franchise system where we can it will be mostly a franchisee on franchisee operated system. So we will transfer the capex and opex liabilities to the franchisee. So that will make us a completely technology company. We will provide the system, we will provide technology, we will provide consultancy, we will provide marketing and sales support. Just one intervention for a layman. Can you just simplify this term called capex and opex? Capex, that is capital extensive. That is a lot of money is required in our system, in any milk system, in dairy system, because we have to purchase chillers, we have to purchase containers, double layered steel containers. Those cost a lot. So this is a capital extensive system and operation intensive. That means we have to do a lot of operations, like we have to go door to doorstep of each farmer, each consumer, and the internal operations are also little bit complex. We have simplified it with our system, but it's still complex. There are a lot of operations involved. So this is capex and opex. So Okay. we have developed the franchisee system for expansion. We are also planning to open maybe a couple of center ourselves to properly monitor and manage the problems, because right now we just have a center. We are trying to expand to 3 or 4 cities currently and sort out all their problems, and after sorting out their problems, developing our systems accordingly, we will try to expand. Yeah. So great thought process around all of it. And if anyone wishes to take this franchisee and replicate it around their locality, how should they go about? And could you go on that? How could you we have a basic procedure. We haven't developed it completely, but we have a basic procedure. It will start by a simple email maybe, and we will get back to them, and after that, if they are interested, we will set them with all our franchisee models. We have franchisee models from 12 lakh to more than 1 crore. There are different types of models can be opened from 12 lakhs to 1 crore. The 1 crore model is around 300 to 3500 liters per day, and the 12 lakh model is around 400 to 500 liters milk per day. So
we will share with them, we will discuss with them. After that maybe we can visit the locality where they are going to open and see the farmers and consumers there. They may need two centers like we have here in Muzaffarpur. They may need a separate two centers for collection and delivery, to keep the milk fresh and to instantly chill the milk. We have to separate the collection and delivery centers. So maybe they may need, on if the villages and cities are near, only one center will do. So these are the basic steps, and after that there may be agreements and purchase ordering and these things. Good. So if anyone has any question, they can go ahead, or I can ask. If anyone has question, please. Yeah, Pushpendra here. So, Aman, you showed me in your video that you have contacted, already got 2 franchisees or center what you are opening in Bihar and UP. Right. कौन 2 जगह है? One is सीतामढ़ी, एक सीतामढ़ी है. सीतामढ़ी, बिहार. Okay. Yeah. और? And one is in Lakhimpur, Uttar Pradesh. And there, after that video was made, there are a couple more, 3-4 more leads, and I think 1 or 2 may be willing to open it, like in Gwalior, I think, or maybe one in Jhansi. So we are getting leads. We don't have confirmation from them, but we are getting leads. Okay, you try to contact. I mean, देखो अगर कहीं तुमको, I'm just trying to give you suggestion. Focus on Devghar because वहाँ पे consumption बहुत high है, ठीक है? Yeah. You will get, अगर वहाँ कोई franchisee मिलता है ना, Devghar will be a very big consumption area. बहुत ज़्यादा required है वहाँ. That is one. Second, I just wanted to know that when you are saying that you have developed an IoT where you are testing the milk. So I just want to understand, ये मतलब हम लोग जब पढ़ते थे उस समय सिर्फ लैक्टोमीटर था जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी पता चलता था. एक्सेप्ट लैक्टोमीटर, तुम और उसमें क्या रीड करते हो टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द मिल्क? हाँ, 2 पैरामीटर्स हम रीड करते हैं. एक फैट कंटेंट मिल्क का, दूसरा सॉलिड नॉट फैट, सॉलिड नॉट फैट. So basically we measure total solid content in that milk. Okay. So there's a 2-axis pricing methodology. फैट और SNF के हिसाब से रेट डिटरमाइन होता है मिल्क का. ज्यादा फैट SNF है तो ज्यादा रेट होगा. Okay. Now you tell me, next question is, I do understand that you are saying Amul and Sudha, Sudha is basically from Muzaffarpur only, and you are saying, and you are saying that they are in packaging and वो 4 दिन 5 दिन पुराने पैकेट्स आते हैं, plus obviously adulteration is there when a packet or plastic is involved. Now my question is, you must have heard of a company called Country Delight. ठीक है? कंट्री डिलाइट भी अभी ऐड दे रही है कि हम भाई आपके डोर पे फ्रेश मिल्क दे रहे हैं, नो इश्यूज. मैं अभी आई एम स्टेइंग इन कोलकाता, मेरे पास पैकेट कंट्री डिलाइट का ही मैं लेता हूँ. नाउ आई चेंज फ्रॉम अमूल टू कंट्री डिलाइट, बट वो भी मेरे को पैकेट में ही दे रहा है, एंड इट प्रॉमिसेस दैट यू आर गेटिंग अ फ्रेश मिल्क. सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, वो तुम चूंकि इस लाइन में काम कर रहे हो, जस्ट टेल मी कि ये लोग भी वैसे अमूल की तरह टोपी पहना रहे हैं या सही में ये लोग भी फ्रेश देते हैं? फ्रेश बोलते हैं वो, बट एक्चुअली मिल्क पैस्चराइज तो रहता है मिनिमम. वो तो ये लिखते हैं कि वो पैस्चराइज मिल्क रहता है, भले ही उनका डिलीवरी साइकिल कितना शॉर्ट है ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता. और वो एडल्ट्रेशन करते हैं नहीं, वो तो उनका इंटरनल होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता. बट प्रोबेबली क्योंकि डिमांड सप्लाई में प्रॉब्लम्स होते हैं सभी लोगों को, और मेनली दिल्ली जैसे शहरों में अगर जब वो सप्लाई कर रहे हैं मेट्रो सिटीज में ही, फिर तो डिमांड बहुत हाई होता है और सप्लाई का प्रॉब्लम तो होते ही हैं. तो प्रोबेबली हो सकता है वो करते हैं. और पैस्चराइज तो रहता ही है, कंप्लीटली फ्रेश नहीं होता मिल्क, पैस्चराइज मिनिमम पैस्चराइज रहता है वो मिल्क. मतलब तुम्हारा कहना है कि अगर कोई पैकेट में है तो वो पैस्चराइज्ड है? हाँ, बिना पैस्चराइज के पैकेट में नहीं जा सकता वो दूध, बिकॉज बिना पैस्चराइज करने से दूध का लाइफ बढ़ता है कुछ, बिकॉज द बैक्टीरिया और जो कुछ. आई गॉट इट. नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं बहुत ज्यादा पूछ रहा हूँ. लास्ट क्वेश्चन इज 90% as far as I know, to get more yield from cow,
all these दूध वाला खटाल में they put oxytocin hormone, जिससे उसको 5 लीटर के बदले 6-8 लीटर या 9 लीटर का दूध उसको मिल जाता है, ठीक है, and they push overnight. Now oxytocin is freely available hormone or a medicine you can say in market, but it has a very very bad side effect. You pata nahi people know here in the call or not, but just for a message to everyone, this oxytocin is a hormone basically which is used in labor pain or for basically to deliver a baby. इसका use इसमें ही है, but बाद में पता चला it has lot of usage. So ये आजकल जो भी आप high yield either vegetable हो milk हो सब में ये farmers are putting oxytocin. And when we are eating this, I had seen a session मेरा, I'm in life science healthcare sector only. We had a session where we found that whenever we are consuming this oxytocin indirectly, either through milk or through the vegetables where these chemicals are being used, it's very badly affecting human beings. Or 30 to 40% of miscarriage in females are happening only because they are consuming this oxytocin milk. Because oxytocin का काम है लेबर को इंड्यूस करना, इसलिए वो जो चीज 9 months तक होना चाहिए वो 5 महीने या 6 महीने में ही वो प्रीमेच्योर डिलीवरी कराता है, that causes miscarriage. So this is basic. So my question is, Aman, cutting short, कि are you testing the level of oxytocin also in your testing machine? Actually, no, we are not, but there's some valid reasons for that, because we don't take milk from the big farmers. जैसे हम खटाल से हमारा दूध नहीं आता, हमने हर छोटे से छोटे फार्मर का नेटवर्क बनाया है. We even take milk, half liter milk from farmers. जिनके पास आधा लीटर दूध भी होता है उनसे भी लेते हैं, जिन्हें 2 लीटर होता है उनसे भी लेते हैं. तो इतने छोटे फार्मर्स हैं ना, उनके पास एक्चुअली एक तो एक्सेस नहीं होता उनके पास ये इन चीजों का, और वो करते भी नहीं ये चीजें. तो राइट नाउ वी आर नॉट टेस्टिंग फॉर दोज काइंड ऑफ एडल्टरेशंस, बट वी कैन इंक्लूड इट इन आवर सिस्टम एज वी एक्सपैंड. हाँ, ऑक्सीटोसिन तुम जरूर रखना, बिकॉज दैट इज अ वेरी बिग इशू इन मार्केट. बहुत लोगों को पता नहीं है, बट दैट इज कॉजिंग अ ह्यूज हार्म फॉर ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तुम वो नोट करो, बट उसको तुम अपने IoT में या जो भी तुम्हारा टेस्टिंग डिवाइस में उसमें रखना. बिकॉज हो सकता है मुजफ्फरपुर में तुमको अभी अपने रामपुर या वहां नहीं मिल रहा है, बट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड, स्पेशली इन बिहार एरियाज जहाँ मेरा गांव है, जैसे भागलपुर है, ये है, बांका है, आई नो वहां धड़ल्ले से चलता है. ठीक है, तो यू विल हैव टू कीप इट on track. I am done from my side. Any other questions you guys can ask? Thank you. So we will go in the order. Pehle Ritesh tha. Please ask your question. Thanks, Prince and Aman. It's first of all fantastic job. I have a background in dairy, in the sense I worked for Amul for 2 years, and then I quit my job and I went to New Zealand. I worked in a dairy farm because I wanted to be a farmer. After doing Irma and Amul, I worked in a dairy farm with 3,000 cows, and jobs included right from milking the cow to chilling the milk, and we used to supply it to a cooperative called Fonterra, which it's the Amul equivalent in New Zealand. It's one of the finest dairy cooperatives in New Zealand. So what you are doing is amazing. You know what, I am telling you from my experience. Companies like Amul or Sudha, which is also part of a federation, they are cooperatives, you know, and their structure, their financing, their operations is geared to a strategy of bulk processing. आप दूध लो, अभी भी अमूल का जो है, अभी आप उसका एनुअल रिपोर्ट लोगे, so most of the revenues come from milk, simple milk, unprocessed. आप जो प्रेशराइज करके देते हो, अब वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट होता है, जैसे आइसक्रीम हुआ, पिज्जा हुआ, पनीर हुआ, it's still say 20 to 25% जहाँ, but most of their money still volume comes from the milk. And you rightly pointed out कि जब अमूल से कोई मिल्क लेता है, या तो आधा लीटर या
वो बड़े होटल में 6 लीटर पाउच में सप्लाई करते हैं, वेरी पॉल्यूशन। हम लोग का जब इंटरनल मीटिंग होता था अमूल का, हम काइजन कहते थे उसको। So not today, 10 years back also we had this problem of pollution. So first of all, you are eliminating that part. And second, अगर आप ट्रेंड देखो, particularly मैं यूरोप और बड़े cities इंडिया में बात कर रहा हूँ, pasteurization of milk etc. is again going to get fade out in the next 10-15 years in big cities. Trend is towards fresh milk, but because we also realize now, even in like Luxembourg or Germany, fresh milk, when you pasteurize milk, some of the nutritions of the milk gets, away. So you, in fact, you are ahead of the curve, even in a small place, like not small place compared to places like Calcutta, Mumbai, that you are doing this amazing thing in Muzaffarpur, Sitamarhi, and trying to replicate. So it's, as you said, your core strategy is supplying fresh milk from door to the door of the customer, from taking it from the farmer, and in a very small area. And you know what? That is going to be the future. No Amul or no Sudha is going to compete with you. They will. अभी तुमने कभी ट्रेन में जाते होगे तो तुमने देखा होगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का वो होता है, टैंक होता है, ट्रेन में दूध जाता है, जो तुम बोल रहे थे कि दूध फ्रॉम वन, जहां अधिक दूध है वहां से जाते. But Amul is not going, till now, as I know, they are not capable of collecting milk within 2 kilometers area or supply within 15-20. So in terms of strategy and the technology you have built around it is fantastic. And the second thing which I was thinking जब तुम बोल रहे थे, which you already answered, कि तुम्हारा जो business है ना अमूल कलेक्शन का नहीं है, तुम्हारा business जो है मेन है ये टेक्नोलॉजी का है. ठीक है, अमूल का बड़ा बड़ा जो बस जो ट्रक जाता है ना, हमारे जब मैं अहमदाबाद गांधीनगर में था, मदर डेयरी गांधीनगर में, तो हिम्मत नगर राजस्थान से बड़े बड़े ट्रक आते थे. ठीक है, तुम्हारा और वही, एंड देन टेकिंग क्यू फ्रॉम पुष्पेंद्र, देयर आर किट्स व्हिच नॉट ओनली यू कैन do 150 or 200 kinds of test, solid not fat, to bring those kind of, जैसे उसने ऑक्सीटोसिन का बोला, OT, we call it OT test, कि पार्ट पर मिलियन में दूध में कितना है. So there are kits which you can install. There are some Swiss companies which are not very expensive, and you can do the test on the fly. Means जैसे ही तुमने दूध कलेक्ट किया, डाला, it will give you like 150. तुमको 150 रीडिंग नहीं करना है because it's not relevant, और अभी लोगों को पता भी नहीं है. But of course, तुम फैट का टेस्ट करते हो, ये करते हो, but health, you can make some health parameters, कि हार्मोनल उसमें क्या क्या है. So that will give you an edge on people who are still figuring out what it is about. And the second great thing what you have done, I would request you not to move away. Franchisee model is an excellent model. जैसे तुमने बोला capex, तो तुमको गाड़ी नहीं खरीदना पड़ेगा, chilling plant नहीं बैठाना पड़ेगा. You use my money, okay, and you give me technology. What you're going to do is investing in technology. In fact, Amul भी ये करता है. Amul आइसक्रीम में करता है. तुम अगर किसी भी छोटे दुकान मुजफ्फरपुर जाओगे, आइसक्रीम का जो डीप फ्रीजर होता है ना, वो दुकान वाला नहीं खरीदता है. तो अमूल में हमारा स्कीम था, हमारा अपना डीप फ्रीजर. उसमें क्या करते थे, जैसे तुम अमूल हो और मैं दुकान, मेरा एक छोटा सा दुकान है, तो तुम बोलोगे भाई ऐसा करो, तुम अपना 50% फ्रीजर का पैसा लगाओ, मैं तुमको 50% दूंगा. ठीक है, और अमूल क्या करता, बल्क में डीप फ्रीजर खरीदता था, तो ऐसे ही उसको सस्ता मिलता है. तो पैसा पूरा नहीं डालता. तो तुम जो स्ट्रेटेजी ले रहे हो, अपना गाड़ी लाओ, हमसे तुमको टेक्नोलॉजी देंगे कि दूध कैसे टेस्टिंग करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं. वन इंपॉर्टेंट थिंग, यू अगर तुम एक्सपैंड कर रहे हो, तुमने ऑलरेडी सोच लिया होगा अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द मिल्क. जो सीतामढ़ी में दूध का प्राइस है, हो सकता है मुजफ्फरपुर में नहीं हो, और सीजनल वैरायटी में. तो तुम जो इन्वेस्ट कर रहे हो अपना डेटा एनालिटिक्स में, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट. जैसे सीतामढ़ी के उस एरिया में दूध का भाव क्या है, गर्मी में क्या भाव है, ठंड में क्या भाव है, बरसात में क्या भाव है, तो यू विल हैव टू कीप ए वेरी गुड डेटा एनालिटिक्स टू मेंटेन दैट. एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर वाज, जैसे तुमने किसी फ्रेंचाइजी लिया ना, मेक ए कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्लान मैनुअल, जैसे रितेश या
सत्यम या प्रिंस आनंद ने फ्रेंचाइजी लिया, ब्रिंग हिम टू योर प्लेस इन योर सेंटर, उसको हम मुझे और प्रिंस आनंद ने सत्यम को मार्केट में भेजो अपने गाड़ी के साथ, ठीक है, कलेक्शन कैसे होता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे सप्लाई करते हैं। अमूल में भी जब हम फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते थे, फर्स्ट 2 मंथ्स हमको भेजते थे आइसक्रीम बेचने, कोई आइसक्रीम बेचने आता था, कोई तेल बेचने आता था, कोई पिज्जा बेचने आता था। तो मेरा था दिल्ली में, तो उस समय हम आपको क्या बोला था, तुम्हारा ये एरिया है दिल्ली का, तुमको तुम्हारा टारगेट है इतना आइसक्रीम बेचने का है, वो जो दुकान वालों को, और अपना डीप फ्रीजर बेचने का है। तो यू रियली टेंड टू लाइक, you think that these small shop people are not so intelligent or not so business savvy. They are 10 times more business savvy than us, you know, कि कौन सा आइसक्रीम उनको रखना है, भाई मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं रखना, इस एरिया में वनीला ही चलता है। तो सेम, prepare a detailed manual from, you know, A to Z for any franchisee, and it should be non-negotiable. Anyone who takes a franchisee needs to get a training from you, okay, get certified, and then only, क्योंकि इसमें रेपुटेशनल रिस्क है तुम्हारा। मान लो फ्रेंचाइजी ले लिया मिल्क विला का, बहुत पैसा ऐसा लगा है, मान लो दिस इज फूड आइटम एंड देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट लॉज एंड हेल्थ लॉज, तुम्हारा एक दिन एक बच्चे ने खराब दूध पी लिया, कुछ हो गया, your reputation is gone. So you have to be very, very, very careful. I'm sure you've thought about it, but I'm just sharing your experience. So you have to train these guys on the health regulation क्या है, दूध कितना रख सकते हैं, सफाई कैसे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मिल्क हुआ तो उसको कैसे बेच सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, which I will come to the next point. Last point, तुम्हारा जो फ्लश सीजन होता है विंटर में, तुम्हारा दूध अधिक, अभी तो मान लो छोटा बिजनेस है, अधिक मिल्क नहीं हुआ, तुमने बाजार में हलवाई को दे दिया या किसी होटल में दे दिया, चल गया। लेकिन जब तुम्हारा बिजनेस स्केल अप होगा, तो नॉट ओनली यू, ऑल द अदर फ्रेंचाइजीज, एटलीस्ट इन द बिग सिटीज, यू नो, they will have this problem. तो you may like to think, जैसे तुमने बोला अभी दही बना देते, पनीर बना देते, उसमें पैसा है। Think about this, at least in the flush season. हो सकता है तुम पेड़ा बना, जैसे देवघर में, just give you an example, देवघर में तो one product could be, instead of making ice cream, जो additional है तुम पेड़ा बना कर बेच सकते हो। So, और उसमें तुम्हारा मार्जिन भी है, तुमको पता है कि लिक्विड मिल्क में तुम्हारा भाई मार्जिन एक एक पैसे का होता है, मीन्स यू नो इट्स डिफिकल्ट। सो थिंक अबाउट सम वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट, और तुम्हारा इतना अच्छा लॉजिस्टिक सिस्टम है, किसी को मान लो अगर पूजा है, ठीक है, उसने ऑर्डर कर दिया, भाई मुझे इतना पेड़ा चाहिए, ठीक है, इतना, मान लो किसी का शादी होने वाला है, बड़ा छोटा ही शादी है, मुझे इतना पनीर चाहिए, so you can reach that, you know, the fresh paneer. So that's from my experience, but I am really amazed by your, you know, strategy, your vision, and the technology you are using to, you know, achieve this. And it's a matter of pride for all of us here listening from you, Aman. Thank you very much for sharing your thoughts. Thank you, Ritesta, for your wonderful insights. A couple of points I would like to add, that we do our supply management, demand supply gap management using products and using hotel owners. And we also try to maintain our milk collection. We try to maintain our milk collection in the summer season, according to the summer season, because in summer there's some shortage of supply. So we try to keep our supply as much as we have in our summer season, as much as we can cater the demands of summer season. And apart from that, if there is an extra milk, if there's some extra milk, so we use that milk to make products, or we use there are some long term products which have a very long shelf life, like khoa, the pera that you mentioned. It's in those things have a long shelf life, so those things can be used to manage the demand supply gap. Good. I also got this thought in between. Why don't you collaborate with Akshay Patra kind of organization and supply milk to government schools along with midday meal? That could be a great collaboration. Could be done. So let's go with next. Sanjeev Da, please ask a question. हाँ, पहले तो अमन जी बोलता हूँ। मुझे लगता है यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ आरके मिशन, वन ऑफ द यंगेस्ट। मैं तो नहीं सुना तुमसे कम एज का किसी का अभी तक, तो कंग्रेचुलेशंस के लिए। और इतना अर्ली स्टार्ट किया तो
लाइफ में काफी काम आता है। सो गुड। और जस्ट एक चीज पूछना था और एक चीज शेयर करना था। पूछना ये था कि जस्ट क्यूरियोसिटी है, जैसे सपोज कहीं से मिल्क ले रहे हैं 1 लीटर 2 लीटर, तो मान लीजिए रात का रखा हुआ है उनका, सुबह का गाय का नहीं है, रात का रखा हुआ है, किसी कारण से नहीं बेचना चाहा, अगले दिन बेचा और ठीक से स्टोर नहीं किया, तो तुम्हारा मिल्क तो एक कॉमन कंटेनर में जाता है, तो कैसे इंश्योर, पीएच मेजर करते हो, क्या मेजर, कैसे इंश्योर करते हो कि वो मिल्क खट्टा ना हो के बाकी को खराब ना कर दे? एक्चुअली हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड अप्लाई करते हैं। कंपार्टमेंटलाइज्ड हमारे पास वो है चिलर्स। तो एक तो मिल्क को हम लोग सेग्रीगेट करके रखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क को और डिफरेंट टाइम के मिल्क को। एक तो वो है। दूसरा, जब हम मिलाते हैं तो उससे पहले हम बेसिक पीएच टेस्ट वगैरह तो कर लेते हैं, वो मिल्क खराब नहीं हुआ है। और कभी ऐसे हमने एक्चुअली सप्लाई चेन सॉर्ट कराया है ना, और हम लोग ने आईओटी वगैरह लगाया है, उससे हमने लीकेज और स्पॉइलेज को खासकर बहुत हद तक कम कर लिया है। हमारा बहुत मतलब बिल्कुल होता ही नहीं है, स्पॉइल बहुत कम होता है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ठीक है, वो तो है, मतलब जनरली इंसेंटिव नहीं रहेगा उनके पास, जो उनका डेली अर्निंग है वैसा नहीं करेंगे, पर पता नहीं चलेगा ना, किसी ने डाल दिया तो सबका दूध खराब हो जाएगा, इसलिए पूछा मैंने कि पीएच से मालूम चल जाता है ना कि वो बासी है कि नहीं। हाँ ठीक है। और शेयर ये करना था जो खोआ के बारे में बताया मैंने, एक लोकल एक छोटा सा एक जगह है, आश्रम जैसा है, तो उन्होंने कुछ लोगों ने गाय दान किया था, तो उन्होंने किया था ये चीज, तो इसमें तुम्हारे वाले में भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, मुझे लगा कि अच्छा आइडिया था वो ये था कि वो दूध जो बेचता था ना, तो दूध में तो एनीवे फ्लक्चुएशन होता है क्वालिटी में, क्या चारा खा रही है गाय का, हेल्थ कैसा है। तो क्या हुआ कि रोज कस्टमर से कंप्लेन आता था, क्योंकि दूध में क्वालिटी पता चलता है लोगों को, तो सस्पेक्ट तो ये करते हैं पानी मिला दिया। तो उसने फिर खोआ बना के हलवाई को बेचना शुरू किया, बोला कि उसमें मार्जिन भी अच्छा, 220 रुपए किलो बेच देता है, तो बोला कि मार्जिन भी अच्छा मिलता है और कोई कंप्लेन नहीं करता है। तो ये तुम्हारे केस में तो खैर फ्रेश मिल्क है, लेकिन ये साइड में वो वाला पॉइंट्स है कि जो तुमने ऑलरेडी बोला ही, तो मुझे लगा कि जस्ट बहुत सही पॉइंट है वो खोआ वाला पोर्शन। और एक्चुअली बहुत बल्क में कलेक्शन होता है, बहुत ज्यादा फार्मर्स होते हैं, तो किसी एक फार्मर का फैट कम हुआ, किसी का ज्यादा हो जाता है, तो ये ओवरऑल एक्चुअली मेंटेन रहता है हमेशा, बहुत कम फ्लक्चुएशन आता है डे बाय डे, डेली बेसिस पे। यस, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वो किसी एक 2-3 गाय है तो उसका होगा, पर एग्रीगेट होने से ठीक है, सही स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल एवरेज आ जाएगा। गुड, ठीक है। Aman and Sanjeev da, I would like to, जब ये टॉपिक पे बात आया है, I'm sure Aman is working on it or thought over it. This is a classical problem. Any जो collective business होता है ना, सप्लाई, अमूल में भी यही प्रॉब्लम, जब आज से 60 साल 1947 में शुरू हुआ, बट कोऑपरेटिव जब शुरू हुआ, तो जैसे आपने बोला कि मैंने अच्छा दूध दिया, संजीव दा ने खराब दूध दिया, ठीक है। तो अमूल का सिस्टम क्या है, हाउ टू इंसेंटिवाइज और डी इंसेंटिवाइज दिस। तो एक तो अमन, तुम पैसा देते होगे फैट कंटेंट पे इंडिविजुअल फार्मर को कितना है, तो अमूल का क्या है कि मंथली और क्वार्टरली एंड पे एक ओवरऑल इंसेंटिव टू ऑल द फार्मर्स है उस एरिया का। तो मैंने अच्छा दूध दिया, चलो मुझे पैसा अधिक मिल गया, लेकिन वो बोलते हैं कि एट द क्वार्टर एंड वी विल डू एन एवरेज क्वालिटी चेक, इफ द क्वालिटी इज अबव दिस यू विल गेट अ बोनस। तो अब संजीव दा ने खराब दूध डाला, अब मुझे पता चला, तो एक मैं बोलूंगा संजीव दा आपके वजह से हमारा बोनस कम होता है। तो this network, this because of this, it's not an incentive for Sanjeev Da to add, or Ritesh keeps a check on Sanjeev Da to make sure he doesn't give what, मतलब उसमें खराब दूध दिया। तो you have to, एक term है उसका cooperative movement में, I don't remember that term, but you have to align the incentive of all the other people. Individual, चलो I am the getting money, बट तुम जब अलाइन कर दोगे ना कि सब अच्छा दूध देंगे तो बोनस भी अच्छा मिलेगा। तो थिंक ओवर इट, इट मे बी 10 पैसा 20 पैसा एट द एंड, क्वार्टर एंड और 6 मंथ्स एंड, डिपेंडिंग ऑन दिस, एंड यू एडवर्टाइज। जब तुम जाओगे ना तो ऐसे ही शुरू मत करना, 6-7 महीने पहले, कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ओवरऑल इस हाउस होल्ड से जितना दूध आएगा और इस एरिया से जितना दूध आएगा, अगर क्वालिटी इसके अबव है, फैट एवरेज इसके ऊपर जाता है, तो वी विल गिव 2 पैसा 3 पैसा पर लीटर हम दें, बट यू मे हैव ऑलरेडी डन इट।
But Sanjeev, thanks for bringing this point. And there is people, this was realized, and this is how cooperative movements work. Cooperative movements is collaboration. You know, अगर आप खराब दूध देते हो, मैं खराब दूध देता हूँ, तो ओवरऑल जो सोसाइटी है, ओवरऑल जो मिल्क बोनस है, इंसेंटिव कम हो जाता है. और मैं आपके सेम गांव में है, तो मुझे पता है. So in a small place, it's a big incentive to keep this kind of bonus system. एक और चीज है, मुझे जानना था इसके बारे में कि मैं बहुत साल पहले अमूल के बारे में पढ़ा था ये चीज कि उन्होंने क्यों पाउडर बना के करना शुरू किया था. तो उस समय उन्होंने बताया था कि बहुत साल पहले का, 30-40 साल पहले का बात है, मतलब वो आर्टिकल जो था उतना पुराना था, उसमें था कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल था स्किम मिल्क बनाने का, वो काउस पे था और उधर भैंस पे कुछ था, ऐसा चक्कर. बताना, करेक्ट करना मुझे, मैं तो जो पढ़ा था. तो उन्होंने इन हाउस डेवलप किया कि कैसे मिल्क को स्किम मिल्क बनाते हैं, और ये पर्पस वही था कि फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए सॉलिडिफाई करना पड़ेगा. तो मुझे ये जानना है कि जब स्केल अप हो जाएगा तो ये चैलेंजेस तो आएगा ही. मतलब बाई प्रोडक्ट, जब ये बता रहे हैं, रितेश ने बताया कि बाई प्रोडक्ट हमेशा छोटा मार्केट ही रहा है. हो सकता है तुम्हारे केस में इनोवेशन के थ्रू कुछ नया मार्केट डेवलप हो, पर अभी तक ये ट्रेंड है कि बाई प्रोडक्ट्स एक छोटा सा मार्केट है. तो ये चैलेंज तो इसमें भी आएगा. तो रितेश बोले या फिर अमन जी आप बताएं कि वो चैलेंज, मतलब पाउडर बनाने का जो चैलेंज है वो या नहीं करोगे तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगा, तो क्या वे आउट क्या है? रितेश तक आई थिंक माइक ऑफ है. रितेश आपका माइक म्यूट है. रितेश आपका माइक म्यूट में है. आपका माइक म्यूट पे है सर. वो कहीं गए हैं लगता है. इज नॉट एट हिज सीट है क्या? Sorry. Can you hear me now? Yeah. Okay, Yeah. I will start again. Sanjeev, the पहला point जो आपने बताया, milk powder, yeah, it was true. In the world at that time, 50 years, there was no technology to convert buffalo milk into powder, but it was an Indian scientist. उनका नाम याद नहीं आ रहा. वो इरमा में भी आते थे, अमूल में भी आते थे. He was the first scientist to prove that buffalo milk can be converted into powder. So now coming to the second point, just मैंने अमन और आपको जब बोला था कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स स्टिल अमूल के लिए कम है, बट दिस विल नॉट होल्ड ट्रू फॉर अमन्स मिल्कविला, क्योंकि आई वाज गिवन एन एग्जांपल. अगर मुझे पेड़ा खरीदना हो, अच्छा पेड़ा, आई विल स्टिल गो टू द लोकल स्ट्रीट में जो सबसे अच्छा पेड़ा बनाता है बाबा धाम में, उसका फेमस, वो पेड़ा लेने जाऊंगा. अमूल का पेड़ा नहीं लेने जाऊंगा. वो कब बनाया है, कब रखा है. बॉम्बे में हो सकता है पिज्जा लेना अमूल, बट अदर प्लेसेस अमन्स बिजनेस मॉडल एकदम ऑपोजिट हो सकता है कि मुझे पता है कि अमन का जो दूध है वो फ्रेश होता है, वो पेड़ा बनाता है, अधिक से अधिक हो सकता है 1 महीना पुराना हो, बट लोकल मिल्क का अच्छा पेड़ा बनाता है. हो सकता है मुझे फ्रेश, मैं फोन करके अमन को बोल दूंगा कि मुझे यार फ्रेश सेल्फ लाइफ जिसका 2 हफ्ते है वो वाला पेड़ा दो. तो इट कुड बी कंप्लीटली ऑपोजिट, बिकॉज अमन्स मिल्कविला हैज एडवांटेज ऑफ दैट लोकल प्रोक्योरमेंट, लोकल डिमांड. कहाँ, मान लो छठ में कौन सा दूध, कितना दूध चाहिए, कौन सा मिठाई चाहिए, अमूल नोज दैट. अमूल को नहीं पता चलेगा. अमूल को पता भी है तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्मॉल, यू नो, दे नीड thousands and thousands of tons of milk and logistics to that. में पेड़ा बनाया तो बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल. नंदिनी है कर्नाटका में, एक कोऑपरेटिव है, उसका पेड़ा बहुत फेमस है क्योंकि वो लोकल प्रोक्योर करता है दूध, अच्छा पेड़ा बनाता है. आप कर्नाटका में किधर भी जाओगे तो बोलोगे पेड़ा ना, तो बोलेगा नंदिनी का पेड़ा, अमूल का पेड़ा नहीं बनता. सो सेम हो सकता है कल हो जाए, मुझे मिल्कविला का पेड़ा चाहिए क्योंकि हमको पता है मुजफ्फरपुर का फ्रेश मिल्क लेता है, अच्छा पेड़ा बनाता है, मुजफ्फरपुर में ही कंज्यूम हो जाता है. मुजफ्फरपुर से हो सकता है कलकत्ता नहीं जाता. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अमन्स बिजनेस मॉडल, बीइंग लोकल, बीइंग फास्ट, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई व्हाट यू वांट. तो अमन जी मैं एक प्रपोज करता हूँ, ठीक है, जस्ट एक आइडिया प्रपोज करता हूँ. सपोज मैं आइडिया, मतलब मैं ही चाहता हूँ कि एक पेड़ा का
एक वर्कशॉप नहीं बोलना चाहिए, इस फील्ड में वर्कशॉप नहीं बोला जाता है, एक दुकान खोलना चाहता हूँ सपोज। तो मैं क्या करूँगा कि तुम्हारा जो फ्रेंचाइजी है उसका हाफ पोर्शन ही मेरे काम का लूंगा। मैं कहने का मतलब, मेरे पास कस्टमर तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के होंगे जो पेड़ा खरीदेंगे, मेरे पास कलेक्शन का प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे एज ए फ्रेंचाइजी जो कलेक्शन पोर्शन है, घर घर डिलीवरी नहीं, कलेक्शन पोर्शन मेरे लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया कि तुम एक उस लेवल तक कलेक्शन में तुम्हारा मॉडल हेल्प कर दिया, और मेरे पास वैसा शुद्ध दूध, हाई क्वालिटी दूध मिल गया, फ्रेश मिल्क, और पेड़ा डेफिनेटली अच्छा होगा। तो मुझे वो सेकंड पार्ट जो है कस्टमर से डील करने का, डिलीवरी पहुंचाने का, वो पार्ट बच जा रहा है। तो ये भी एक है जो वर्टिकल इंटीग्रेशन, जिसमें कि तुम्हारा फोकस टेक्नोलॉजी पे रहेगा, और एक है जो पेड़ा का दुकान है वो अपना ऐप के थ्रू डायरेक्ट अपने पास ही लेगा। बस इतना ही है, और इससे ज्यादा नहीं। तो इसमें क्या है ना कि कलेक्शन और डिलीवरी का जो ये मैनेजमेंट है ना, मैच करना, ये बहुत बड़ा इश्यू है सबके लिए। तो उसके लिए क्या है ना कि एक हमने एक चेन बनाया है। मे बी अगर आप उस सारे दूध को उपयोग कर सको, यूज कर सको, तो हम सिर्फ कलेक्शन सिस्टम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी सेल्स सिस्टम हम टेक्नोलॉजी को यूज करके आप कुछ अलग आपके लिए बना दें, या फिर आप कुछ आप खुद के पास आपके पास दूध नहीं आ रहा है तो उसमें मे भी हम हेल्प कर सकते हैं। बट एक्चुअली अगर इफ यू कैन डू इट देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर सम इशू विद द सप्लाई एंड डिमांड। मे बी सप्लाई ज्यादा हो गया, फिर आप क्या करोगे, डिमांड ज्यादा हो गया, फिर आप क्या करोगे। तो ये थोड़ा सा मैनेज करना होता है वहाँ पे। दूसरा कि इन कंट्रीज लाइक इंडिया हर 15 दिन पे कोई ना कोई त्योहार आता है। जैसे कि हमारे पास, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन का वो दे रहा हूँ जवाब, सप्लाई डिमांड वाले का, कि जब जैसे कि हमने दूध ठंडे ठंडे का मौसम है, दूध हमारा थोड़ा कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो जैसे कि हर दिन मान लो हमारा 50 लीटर दूध बढ़ जा रहा है, तो 15 दिन में हमारा 600-700 लीटर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करते हैं। तो हमारा दूध पुराना तो नहीं होगा, बट हमारे पास 600-700 लीटर दूध एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब क्या करेंगे ना, हर 15-16वां दिन वो हो जाता है, एक कोई ना कोई त्योहार आ जाता है इंडिया में। एकादशी है, या फिर नवरात्रा है, छठ है, दीपावली है, कुछ भी है, तो कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है हर 15वां दिन। तो उसमें क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा हाई पिक कर जाता है एक बार में। तो वहां पे हमारा जो भी एक्स्ट्रा दूध है वो चला जाता है। एक ये है। दूसरा कि डेयरी डेयरी के जो सिस्टम्स हैं, एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सिस्टम्स, ये आज से 40-50 साल पहले आई थिंक बने हुए हैं। उस समय के हिसाब से बने थे। इसमें उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सुधा भी है, सेम मॉडल पे वर्क करती है। और इनमें क्या प्रॉब्लम है ना अभी के टाइम पे, कि जितने बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। फार्मर्स के बाद लोकल विलेज कलेक्शन यूनिट्स पे जाते हैं दूध, उसके बाद वहाँ के यूनिट से एक लोकलाइज्ड बल्क मिल्क कूलर्स पे जाते हैं, चिलर्स पे जाते हैं, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके लोकल जो प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद जो डिलीवरी व्हीकल्स है वो शॉप्स पे पहुँचाते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइकिल है, और हर कोई क्या चाहता है ना कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो क्या होता है ना कि हर पॉइंट पे लीकेज होता है। सबसे ज्यादा सफर करने वाले फार्मर्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर बंदा अपना, जैसे कि उसने टेस्टिंग मशीन ही अपना वो कर लिया, थोड़ा चेंज कर लिया टेस्टिंग मशीन का रीडिंग, जिससे कि फार्मर्स को कम रेट मिले। फिर जो चिलर वाला है वो अपना टेस्टिंग मशीन थोड़ा वो कर लिया ताकि उसे ज्यादा रेट में ज्यादा पैसा मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इन चीजों को के कारण लीकेज बहुत बढ़ जाता है। और डेयरी को ऊपर एक्चुअली सुधा वगैरह हैं, ये सब तो इंसेंटिव पे ही चलते हैं मोस्टली। तो इनकी कोई प्रॉफिटेबल कंपनी तो है नहीं सुधा, ये सब। सुधा, मैं मोस्टली बिहार में हूँ तो मैं सुधा की बात कर रहा हूँ। तो इनकी अगर बात करूँ तो ये बस किसानों का लाइवलीहुड चले इसलिए चलाया जा रहा है, बट बहुत इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इनमें लीकेजेज हैं। इन चीजों को हमने सॉल्व करा है मिल्कविला के थ्रू। Great. So let's go with the next question. Prakasta, please ask the question. सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि अमन ने शुरुआत जो की है इतने अच्छे ढंग से की है, और इसमें इनोवेशन भी है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स भी है, और साथ में इसने बहुत कुछ ग्रासरूट में काम करके देखा है कि किस तरह से काम किया जा सकता है और क्या माने जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसमें। तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगा इतना यंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के लिए। एक क्यूरियोसिटी मेरी ये है कि बहुत कुछ जो ऑनलाइन सिस्टम्स है, नेट के थ्रू डिस्पेंसर हो रहा है, या क्वालिटी या मिल्क का क्वालिटी आप या तो कलेक्ट कर रहे हो या डिस्पेंस कर रहे हो, तो उसमें नेटवर्क इश्यूज आते हैं कि नहीं? पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि उसमें अगर गांव में अगर आपका मॉडल आप स्केल करके बहुत जगह ले जा रहे हो, तो
अगर अगर हम दूध ले रहे हैं, वहां से आया कि 2 लीटर दूध इनको दे दो, और बीच में नेटवर्क इश्यूज आ गया, तो उसमें क्या होगा? इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है कि? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है। नेटवर्क इशू की अगर बात करें तो एक्चुअली ये जो चीजें हैं ना लोकलाइज है, जैसे कि दूध निकाले वाला मशीन है, तो ये लोकलाइज कनेक्टेड है फोन से। तो जैसे कि 2 लीटर देना है तो हम सामने में दबा के, कोई इंटरनेट के थ्रू डेटा राउट नहीं हो रहा है, अच्छा, लोकली कनेक्टेड है। तो उसमें ये प्रॉब्लम कुछ नहीं आई है। हाँ, और दूसरा कि अगर जैसे गांव वगैरह है, वहाँ पे डेटा सिंकिंग का प्रॉब्लम होता है कि जैसे कि हर जगह नेटवर्क नहीं आता। ये बहुत कम हो गया है 2017-18 के बाद, वो रिलायंस जियो के आने के बाद ये काफी हर जगह इंटरनेट पहुंच गया है वैसे तो। बट अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो लोकलाइज डेटा स्टोरेज होता है, और जहाँ पे भी नेटवर्क मिला वहीं पे सिंक हो जाता है सर्वर के साथ। अच्छा, दूसरा जो तुम्हारा बिजनेस मॉडल मैं समझ पा रहा था, वो फ्रेंचाइजी मॉडल है, एकदम प्योर बिजनेस जैसा है। तो इसमें अप स्केल के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, खासकर एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का है ना, फार्मर्स एफपीओज, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो उसने, तुमने नाम सुना होगा, तो मुजफ्फरपुर में है, तो पटना में एक कौशलेंद्र जी हैं, जो आईएम अहमदाबाद का टॉपर होके उन्होंने फार्म्स का बहुत सारा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, कौशल्या फाउंडेशन नाम। उनको, और सब्जी ही बेचते हैं, सब सब जैसे आपने मिल्क का किया, उन्होंने सब्जी का नेटवर्क, जो फ्रेश फ्रेश प्रोडक्ट्स वो भी है। तो उसमें उनका जो मॉडल है, बहुत कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इंसेंटिव्स पर भी बेस्ड है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में, अपार्ट फ्रॉम योर मॉडल, क्या अगर इसमें और रिसर्च किया जाए तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को नाबार्ड हेल्प करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उस तरह का कुछ करने का इरादा है कि? वी आर ओपन टू सजेशंस। हमें मतलब अभी तो स्टार्ट ही करा है हमने, अभी तो हमने कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लिया है, एड नहीं लिया है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम फंड। अच्छा, नहीं तो अप स्केल होगा तो मेरा ये सजेशन है कि नाबार्ड का स्कीम्स है, ठीक है ना, और सेंट्रल मिनिस्ट्री का भी, जो फूड फूड मिनिस्ट्रीज है, उनका भी स्कीम्स है। तो इस तरह का उसमें फार्म प्रोड्यूस के अलावा नॉन फार्म प्रोड्यूस डेयरी का भी। और तीसरी बात यह है कि प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जो क्लोज कम्युनिटी, रितेश बात कर रहा था कि एक कम्युनिटी के रूप में प्रेशर बनता है, तो उसमें फार्मर्स का जो तुम बोल रहे थे ना, वन स्टॉप सोल्यूशन, कि हम पहला पॉइंट जो था तुम्हारा कि फीड और चारा भी हम देंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे। तो उसमें ये कौशलेंद्र जी का मैं मॉडल एक बार स्टडी किया था पटना में। तो वो क्या करते थे कि फार्मर का बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे हम किस तरह से गाय का देखभाल करें, फीडबैक किस तरह से फीडिंग करें तो कौन सी फीड अच्छी रहती है। तो वो एक इंटीग्रेटेड मॉडल अगर बना दिया जाए, तो इसमें तुम्हारे जो डेयरी डेयरी वाले हैं उनका, या छोटे छोटे जो इनकी 1 और 2 गाय है, तो उनको कुछ ट्रेनिंग्स के भी जोड़ा जाए, तो वो आपके साथ स्ट्रांगली कमिटेड भी रहेंगे, और वो क्वालिटी वाले इश्यूज जो है, कम्युनिटी प्रेशर का, वो भी चीज रहेगा। तो इसके बारे में मेरा ये सजेशन है कि आप थोड़ा सा देखो। और तीसरा मेरा ये थोड़ा सा मन ये हो रहा था कि वो वाली बात है कि जब फ्रेंचाइजी मॉडल में आप करेंगे ऑल इंडिया में अप स्केल, तो हर स्टेट की कंडीशन अलग है, ठीक है। तो ये बैलेंस करना पड़ेगा कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो आपका फ्रेंचाइजी का है, जिसमें और सब संजीव ने और भी ट्रेनिंग किया कि एक ट्रेनिंग मॉडल भी होना चाहिए, इमेज नहीं खराब होना चाहिए। तो लोकल फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको एश्योर करना पड़ेगा ना हर स्टेट में, कि नॉर्थ इंडिया में ही टारगेट है, क्या है, मतलब नहीं, प्लानिंग क्या हमने है? एक्चुअली प्राइसिंग वगैरह को भी कम्प्लीटली डायनेमिक रखा है, सीजन्स के हिसाब से प्राइस भी चेंज होते हैं, बोथ फॉर फार्मर्स एंड कस्टमर्स, सिटी के हिसाब से भी चेंज हो सकते हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, या फिर ऑपरेशन मैनुअल है, ये सब ट्रेनिंग मैनुअल है, ये सारी चीजें हम बना रहे हैं अभी राइट नाउ। बट क्या है ना कि ये कुछ चीजें होती हैं जो कि जैसे कि रीजन स्पेसिफिक हो गए, नॉर्थ के अलग होंगे, साउथ के हाँ, अलग, वही वही मैं तो बात। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो देना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो कम्प्लीटली हम वो तो नहीं रख सकते। बिकॉज जैसे कि डोमिनोज वगैरह ही है, या फिर कोई भी कंपनी है जो कि फ्रेंचाइजी देती है, तो अगर इंडिया में उसका कोई बिजनेस है, इंडिया में लोगों का टेस्ट अलग है, दूसरे कंट्री में टेस्ट अलग हुआ, तो अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे स्पाइसेस वगैरह में, इन चीज़ों में, तब वो लोग खाएंगे नहीं ना, तो उन्हें रीजन स्पेसिफिक करना ही होता है। तो ठीक है, स्टैट्यूटरी तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी के रूप में है या क्या है? हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है राइट नाउ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरा ये सजेशन है कि इसमें थोड़ा सा और वर्क कर लो, एक्सप्लोर कर लो, कि यू विल हैव 2 टाइप ऑफ डिफरेंट स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड। एक कंपनी है, ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में, क्योंकि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो आज नहीं, सपोज 5 साल के बाद अगर आपका केस स्टडी पब्लिश हो जाता है,
इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के नजर में आप आ जाते हो, तो दे कैन गिव यू ह्यूज ग्रांट, बट फॉर दिस अभी से ही आपको एक जो कंपनी एक्ट में नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में भी रजिस्टर्ड होता है, सेक्शन 25 है, 16 है, ठीक है ना। ट्रस्ट और सोसाइटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो एक तो प्रोड्यूसर कंपनी वाला रास्ता है, जो नॉन फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या एक और रास्ता है, खैर उसके बारे में अभी नहीं मालूम होगा, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स रहता है, जैसे डेयरी वाले सब लोग है, एक इंटरेस्ट ग्रुप्स है। और तीसरा रास्ता जो है, आप कंपनी एक्ट में ही एक आपको रहना चाहिए, वन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी देयर जो रजिस्टर्ड एज नॉन प्रॉफिट, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ग्रांट एजेंसी है जिस सेक्टर में मैं काम करता हूँ, और गवर्नमेंट की स्कीम्स है जैसे नाबार्ड का, जैसे सब्सिडाइज आपको लोन चाहिए एक्सपेंशन के लिए 10 करोड़ चाहिए, नाबार्ड दे सकती है, ठीक है। तो उसमें कहीं कहीं शर्त कर देती है कि कंपनी ने नॉन प्रॉफिट कोई एंटिटी रहना चाहिए। तो इसको अभी से ही अगर आप थोड़ा सा प्लान करके, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप बहुत सारा काम कर रहे हो, यू आर स्टिल इन द मेकिंग, तो अभी नहीं, लेकिन इस पर एक खोल के कम से कम रजिस्टर करके आप रख लो कि आफ्टर 3 years you can also explore that route for इस expansion for fundraising और forward, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा कि काम जो है तुम्हारा इनोवेटिव है, और चैलेंजेस, चूंकि फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स है तो चैलेंजेस तो अभी बहुत सारा जो अभी बातचीत हो रही है कि ऑक्सीटॉक्सिन ये भी है, और ड्रग्स का भी इशूज है, क्वालिटी वो तो रहेगी, तो यू हैव टू फाइंड योर बेस्ट। ओके, बस मेरा इतना ही। थैंक यू प्रकाश दा। थैंक यू। जस्ट उसमें जो आपने बोला ना प्रकाश दा कि नॉन प्रॉफिट, अभी मुझे याद आया जब मैं पढ़ रहा था कि फॉर एनी प्रॉफिट टू बी एलिजिबल फॉर फंडिंग 3 साल का पहले वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो 3 साल रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप ग्रांट ले सकते हैं। तो आई थिंक यू शुड एटलीस्ट रजिस्टर 3 साल बाद। हाँ, तो मेरा भी यही पॉइंट था, क्योंकि मैं एनजीओ का भी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि कुछ लोग जब जरूरत होती है तो 3 साल नहीं हुआ, तो अचानक आपको किसी ने ऑफर कर दिया, सपोज एक लग्जमबर्ग से ही भेज दिया साहब, रितेश साहब ने कोई, कि आप आपके काम को उधर थोड़ा सा प्रचार कर दिया, वहाँ की कंपनी आके आपको करना चाह रही है, लेकिन उनका भी वही शर्त है कि आप नॉन प्रॉफिट रहना चाहिए, तो बट एट दैट टाइम यू कैन नॉट डू एनीथिंग। 2-3 साल जो ऑडिट हो जाती है, कुछ आप अपना अपना काम से उसमें अपने पैसे से ही शुरू में काम करो, शुरू में आपको ग्रांट्स फंड नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 साल के बाद यू कैन अप स्केल इट। तो ये जो कौशल्या फाउंडेशन मैंने बोला हो, ये इसका वेबसाइट आप पढ़ लेना, तो ये सब्जी बेच बेच के ही इसका भी 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया, मोर देन 100 करोड़। और इसमें जो इंटर्न्स वगैरह ये मुफ्त में भी काम कराते हैं, आईआईएम से पकड़ के वो इंटर्न्स वाले आते हैं फ्रेश, और कहते हैं कि आपको एक्सपोजर देंगे, उनको थोड़ा सा कंसोलिडेशन, तो दे आर यूजिंग अनदर मॉडल, बट हिज टर्नओवर इज मोर देन 100 करोड़ अभी, और उसमें मैक्सिमम टर्नओवर उसकी अपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट की हुई, वो ग्रांट्स एंड फंड्स है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मेरा यही सजेशन। अभी एक और पॉइंट हमारे नॉलेज में आया है, 2-4 दिन पहले, सीएसआर होता है, सीएसआर फंड्स, हाँ, सीएसआर भी नॉन प्रॉफिट को ही मिलती है, राइट। तो हम सोच रहे हैं, अभी हमने एग्जैक्टली क्योंकि आपने जैसे बताया कि काम बहुत है अभी हमारे पास, तो एग्जैक्टली हमने ये प्लान तो नहीं करा कि कब करेंगे, बट हमने सोचा है कि ये कर सकते हैं हम। नहीं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीए से आपको सलाह लेना, चार्टेड अकाउंटेंट से, कि सर हमारे ही ब्रांड का एक हमको नॉन प्रॉफिट जो कंपनी है सेक्शन 16 या सेक्शन 25 में, उसको करने का क्या प्रोसीड्योर है, उसका क्या टाइमलाइन है, फर्स्ट यू गेट सम आइडिया, देन यू एक्सप्लोर इट, और जरूरत पड़ेगा तो मुझे कॉल करना, ठीक। ओके, थैंक यू। सो फाइनल क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, उसके बाद वी विल मूव टू जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे। तो सत्यम दा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Hi Aman, so first of all congratulations, बहुत अच्छे से बोला तुमने, एंड प्रिंस ने भी काफ़ी अच्छे से मॉडरेट किया, सो काफ़ी चीज़ें जो वीडियो में नहीं थी वो भी पता लगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस प्रेजेंटेशन बाय ऑल बोथ ऑफ यू एक्चुअली। सो मेरा जो क्वेश्चन है कि स्टार्टअप्स, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं, स्केल अप करने में ही बहुत सारों को दिक्कत हो रही है, मतलब हम वी आर आई थिंक द सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड करेंटली। तो स्केल अप करने के लिए जो फाइनेंसिंग वाला पार्ट है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग का जो फाइनेंसेस था, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, वो कहाँ से आया, और फर्दर अप किसी बैंक को या कहाँ पे कहीं पे अप्रोच किया जहाँ पे फाइनेंस का, फिर वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, किसी बैंक को अप्रोच किया तो फाइनेंसिंग इजीली मिल गया, या फिर
देने में आनाकानी कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है? मैं बस वो थोड़ा सा उस एस्पेक्ट पे थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, अगर कुछ बता सकते हो। ओके ओके सो इनिशियल फंडिंग तो हमारा अपना ही था। मेरे भैया जो हैं एल्डर ब्रदर, वो मरीन इंजीनियर हैं, तो उन्होंने अपने ही पैसे लगाए हैं मोस्टली तो इनिशियली यहाँ के सिस्टम में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। उसके बाद हमने फरवरी महीने में हमें इसी साल फरवरी महीने में हमें स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम से 50 लाख रुपए का लोन वो हो गया, अप्रूव हो गया। उसमें से कुछ पार्ट अभी मिला है, नेक्स्ट के लिए अप्लाई करा है हमने। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई फंडिंग थोड़े बहुत वो भैया के ही जो दोस्त कम्युनिटी है, उनकी माइंड कम्युनिटी, उन्हीं में कुछ दोस्तों वगैरह से मिले थे, तो बट यही है। उसके अलावा कहीं बैंक वगैरह से हमें फंडिंग नहीं मिली है अभी तक। एंड मतलब लेना नहीं चाहे या मतलब एक्चुअली हम काम करने में लगे थे, थोड़ा बहुत फंड की बहुत ज़्यादा कमी हमने एक्चुअली, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है ना कि प्रॉफिटेबल सिस्टम है ये। जैसे कि आपने बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स की बात की, जैसे कि अभी टॉप 100 यूनिकॉर्न में आई थिंक 20 के आसपास ही यूनिकॉर्न प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट फिर भी वो स्केल अप कर रहे हैं। बट हमारी कंपनी में क्या है ना कि हमारी कंपनी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग प्रॉफिटेबल है। क्या है कि हम कस्टमर से पैसे पहले ले रहे हैं, एडवांस पेमेंट रख रहे हैं, और फार्मर्स को पैसे 15 दिन पे दे रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे कैश फ्लो में भी प्रॉब्लम नहीं होता, पैसे भी पहले हमारे पास आ जाते हैं। एंड कैश फ्लो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा और प्रॉफिटेबल है सिस्टम, कोई हमें लॉस लगा कर नहीं चलाना पड़ रहा है। मार्केटिंग वगैरह भी ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग वर्क करती है, क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं। तो फंडिंग प्रॉफिटेबल कंपनी था, तो फंडिंग का बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ा, और हमने बहुत ज़्यादा बैंक्स वगैरह की तरफ अप्रोच नहीं करने की कोशिश की, क्योंकि थोड़ा वो पेपर वर्क टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, वो सब कुछ मांगने लगते हैं, कैसे करा क्या करा, और जल्दी देते भी नहीं है। हमने बात वैसे हो रखी है सीसी लिमिट वगैरह के लिए, हमने अभी तक अप्रोच नहीं करा है उन्हें। दूसरा उसके अलावा हम कुछ वीसीज वगैरह से वो हैं, अभी हम नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर में वीसीज वगैरह के पास प्रोबेबली जाएंगे फॉर एक्सपेंशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग के लिए, जैसे टेक सॉफ्टवेयर टीम बनानी होगी, डिजाइन टीम वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए हम वीसी फंड वगैरह के पास जाना चाहेंगे नेक्स्ट 2-3 महीने में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्रेंचाइजी हम दे रहे हैं, उन फ्रेंचाइजी के लिए हम बैंक के साथ टॉक्स में है कि जैसे कि 20 लाख रुपए का कोई मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल जो हम दे रहे हैं, तो उसमें मे भी 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए बैंक के थ्रू फाइनेंस अगर हो जाए उस पर्टिकुलर, हमारा उसमें वो कुछ नहीं है, गारंटिंग वगैरह कुछ नहीं है। उस जो फ्रेंचाइजियर है, जो फ्रेंचाइजी है सॉरी जो फ्रेंचाइजी है, उसके अपने क्रीडेंशियल्स के ऊपर, उसके अपने जो भी रिपोर्ट है, उसका क्रेडिट रिपोर्ट, उसके ऊपर उसे कुछ असिस्टेंस मिल जाए वो फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए हम टॉक्स में हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो वीसी का फंडिंग इस स्टेज, मतलब वीसी का रोल किस स्टेज पे मतलब शुरू होता है आप लोग के स्टेज में? और भी कंपनीज को मतलब वो लोग इनिशियली में, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एंजल इन्वेस्टर और वीसी ये दोनों किस किस स्टेज पे? एंजल इन्वेस्टर हो गया जो आपका स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हो गया, वो एक प्रकार का एंजल इन्वेस्टर हो गया जो जिसने इनिशियल कैपिटल में हेल्प किया थोड़ा, और फर्दर जब आप इक्विटी डायल्यूशन करते हो तो आप वीसीज के पास जाते हो, राइट? स्टार्टअप इंडिया में हमें एक्चुअली लोन मिला है, हमें इक्विटी डायल्यूशन नहीं हुआ है, तो वो एंजल इन्वेस्टर्स नहीं हुए हैं ऐसे तो। और एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं मोस्टली, वो अपना पैसा लगाते हैं वो छोटे मोटा, जैसे कि 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, मैक्सिमम 1 करोड़ से नीचे के ही वैसे होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। और स्कैटर्ड लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। वीसीज में क्या होता है ना कि कोई एक वीसी फंड होता है, बहुत सारे बड़े लोगों ने एक जगह एक वीसी फंड क्रिएट कर दिया, उस फंड का मैनेजर रख दिया, और उसका काम है ना वो फंड अब अलग अलग कंपनीज में लग रहा है। जैसे 100 करोड़ फंड आ गया, वो 100 करोड़ उन्हें 10 कंपनीज को देने हैं। वीसी फंड इस तरह के होते हैं। वीसी फंड एक साथ ज्यादा पैसा लगाते हैं, ज्यादा इक्विटी भी लेते हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज होते हैं अच्छे खासे। एंजल इन्वेस्टर्स में है कि वैसे दोनों कंपनीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उन्हें कौन से, जैसे अच्छे लोग अगर एंजल इन्वेस्टर से मिल रहे हैं तो वहाँ भी फायदेमंद है। बट एक्चुअली हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं इन चीज़ों को, अभी हमने बहुत ज़्यादा इसमें वर्क नहीं करा है। अगर आप लोग में से कोई अगर इसमें एक्सपीरियंस्ड हो तो वो हमें हेल्प कर सकता है। Aman, I was coming to that point. First thing, when people were talking about banks, etc., I was doing Nana.
given the situation, I work in finance and particularly infrastructure finance. So पहले 3-4 साल तक तो don't take just overall, मैं तुमको बोल रहा हूँ, don't think of taking debt. You know, तुम्हारा cash flow अच्छा है, profitable है. One way you can look at it, there is something called impact management funds. I will send you some links. जैसे एक Dutch impact management एक fund है, they are for profit fund है, but they only invest in developing countries, and they are called Dutch entrepreneurial bank. For example, your startup, so तुमको अधिक पैसे की जरूरत नहीं, मान लो 1 करोड़ जरूरत है, तो they will invest, and they are proper bank, but of course they will, as I said, there are lots of paperwork, and you need to have a proper business plan, proper risk management system in your place, etc., etc. So to impact investment funds की तरफ देख सकते हो, they are not as like venture capitalists की 3 साल या 2 साल या फिर exit कर दिया. They are for long term. So I will talk to you on this separately, but to answer it to question, some people who already have this experience, हमारे अभी शुरू हुआ था तो गौरव गुडगुटिया था, he also has a startup. So I will send you his details. Please get in touch. उसने 2-3 startup शुरू किया है. Some of, I think 1 or 2 he sold off. So he can properly guide you at least on the paperwork, what you need to see if you're going to VCs, etc. And same for your data analytics. There are lots of people in our Vidyapith. मेरे बैच का ये मधुप, उसने उसका तो स्टार्टअप ही है डेटा एनालिटिक्स का. So if you want to have some ideas on to make your backbone, analytics backbone stronger and what you should look at, you can always get in touch. So Madhup का भी मैं एड्रेस दे दूंगा. And I'm sure among us there are quite a few of us who are doing similar kind of work, and you can get in touch with them. Any support, just हो सकता तुमको पता नहीं हो कि हमारे बीच में कौन है, like someone in data, someone in maybe in technology, somebody in risk management, somebody in credit risk. जैसे नाबार्ड का बोल रहे थे प्रकाश दा, मेरे इरमा के सीनियर है एक फर्स्ट बैच के, he was the director in नाबार्ड, just retired. So if you want, I can put you in touch. You can send an email in the group or Facebook. Does someone know I'm looking for this? Maybe you will get some support from Vidyapith alumni. Someone knows someone and someone knows someone. That's the whole idea of the Adda and Praktani group, to support each other. You know, we are here to support your adventure. तुमको 10 जगह हाथ पैर मारने की जगह 2 जगह मारना पड़ेगा, हो सकता है you will get a contact. So please feel free to put your messages on our social media group, और किसी को email कर दो या मुझे email कर दो, तो we will go through that. Okay, that would be wonderful. Thank you. Also, Prince has a good idea. He wrote on the chat that we can try to build an incubation center within our alumni, so that will also promote the young entrepreneurs, like those who have just passed out of college or are in college, to proceed. Yes, that's one of the ideas. We have also discussed in previous meetings, etc. Incubation center, or just to start with some kind of mentorship. Right. For example, for mentorship for startups, like Gaurav already has this experience. Madhup in my batch has experience. There are some senior dadas also who are entrepreneurs. So we are thinking over it, but it takes some time to develop it. But in the meanwhile, if you need just drop a message. You never know. Like Nabard, I have seen, startup मेरा batchmate है, data analytics मेरा batchmate है. कई लोग यहाँ पर बोल नहीं रहे, but they also know someone may be working in that field, and that can be of help to you. Right. Sorry, Satyam, you can carry on, please. No, I'm fine. So any other questions? I think we can. Yeah, we got a few questions earlier. Let me start with what we got. Srijan, what's from our batch only, asked this question. Can all Milkvilla producers be educated through a friendly app for improving quality of milk and getting higher prices? How state milk federations can be convinced for paying more prices for such quality milk for same fat and SNF, as against union milk societies is paying to other farmers for the fat and SNF? Actually, we don't. Our business model is a little bit different from convincing the state, union, or others to provide more price. But actually, what we do is we provide more money to the farmers.
So naturally in that area, the state cooperatives or other unions have to increase their prices, or else the farmers won't give them milk. It's as simple as that. Okay, one last question, which we got from Kumar Shuamda from 2007 batch. How are the services differentiated from competitors, and what is unique value proposition of Milkvilla? Just we will. Actually, I think I have answered those questions, how this is different and what is our. I will repeat again. Our USP is the fresh milk, non-processed, non-packaged fresh milk. Get it. Anyone else having any question, or else we can wrap up. Okay, so I don't think we have anything to go ahead with. Testa, we can disconnect it. I will give this opportunity to Satyam to wrap up, please. So I think it was a wonderful discussion for all of us. So we all work in different line of work. So it's a good opportunity for us to get exposure to at least some of the things about which we only read. So startups is such an interesting topic. Like the recent Shark Tank has just Shark Tank has like increased the interest in this field of everybody who never actually thought of becoming an entrepreneur themselves. So at least from that perspective, getting insights from a first-hand person who is working, who has a first-hand experience in that area, I think it is wonderful for all of us. Some of us had some exposure, but I think everyone here got to learn something from this discussion. I think thank you to both of you. You actually presented it in a very wonderful manner. So I think we can sign off with this. Okay, thank you.